Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about the properties of nonmetal. But before that, let's have a recall what we have learned in our second class. That's what is nonmetal. Those elements which have 4, 5, 6, 7 electrons in their outermost shells are called nonmetals. Any element which have 4, 5, 6 or 7 electron in their outermost shell, these elements are called nonmetal. Okay. Those elements which form negative ion by gaining electron are called nonmetal. So what is this? They gain electrons. Any element which have 4, 5, 6 electrons in their outermost shell, these elements gain electron from other element to make their octet complete, to make themselves stable. So when an element gain electron, they gains a negative charge. If they gain 2 electron, they will gain 2 negative plus 2 negative charge. So any element which gains electron or more electrons to make them stable, this type of elements are called nonmetal. Okay, so then the physical properties, types of physical properties of nonmetal. Actually, sorry, it will be nonmetal. Types of physical properties of nonmetal. There are two types of physical properties we are going to discuss. Today we are going to discuss about the physical properties of nonmetal. So physical properties of nonmetal. First of all, physical state, how they look. Okay, now they exist in all the three states: solid, liquid and gas. Nonmetals exist in all the three states: solid, liquid and gas. Some of them are solid, some of them are liquid, and some of them are in gaseous state. Okay, those which exist in solid state, mostly they are soft. Those nonmetals which exist in solid state, they are generally soft. Diamond is the exception because it is an allotrope of carbon and it is the hardest element. Okay, diamond is the exception. Diamond कार्बन का ही एक फॉर्म है, ये एक्सेप्शन है हमारा. और ये जो है, ये डायमंड, ये हार्डेस्ट एलिमेंट है अभी तक का. मतलब जितने भी एलिमेंट्स पाए गए उन सब में सबसे ज़्यादा हार्ड ये डायमंड ही है. इसके बावजूद, जब ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद, सो ये एक एक्सेप्शन है. नाउ वी हैव ब्रिटलनेस. व्हाट इज ब्रिटलनेस? एनी सब्सटेंस विच गेट ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन स्ट्राइक विद अ हैमर, दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. So non-metals are brittle in nature. All the non-metals are brittle in nature. When they are struck with a hammer, they breaks into pieces. Okay. Third point is malleability and ductility. In metal, non-metal, we have learned that malleability is the property to draw anything into sheets, and ductility to draw any element into thin wires. In the case of non-metals, they are malleable and ductile. In the case of non-metal, the elements are they are neither malleable nor ductile. We cannot draw into thin wires any non-metal, or we cannot beat them into thin sheets. They are not be beaten into thin sheets or drawn into wires. Non-metals are. This is the reason because non-metals are brittle. When we strike them with the hammer, they break into pieces. So due to this property, due to this brittleness, non-metals are not malleable nor ductile. Okay, next point is luster. What is luster? In metal we have learned that metals are luster. They have their own shine. Okay, in case of non-metals are not lustrous. They don't have shiny surface. All non-metals have dull surface. If you look around any non-metal around yourself, you will see that they appear dull. They don't have their own shine. Okay, but here we have one exception also. Exception is graphite, diamond and iodine. These elements have their own. These elements have lustrous property. They have luster. Okay, so next is electrical conductivity. What is electrical conductivity? All non-metals are generally poor conductor of electricity. जितने भी non-metals हैं हमारे, वो क्या है? जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है.
एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है, एंड हैव अ नॉन मेटल, और एक नॉन मेटल है, बट स्टिल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है हमारा, ये एक एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल होने के बावजूद, और ये कार्बन का एलोट्रॉप है, साथ साथ में नॉन मेटल भी है, कार्बन से बना हुआ इस वजह से, बट फिर भी ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका रीज़न ये है कि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next is thermal conductivity, how they react to heat. All non-metals are generally poor conductor of heat. जितने भी non-metals हैं हमारे, ये सब generally poor conductor of heat है, ये हीट को अपने से ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting and boiling point of non-metals. All non-metals generally have low melting and boiling point, but non-metals which are solid have comparatively higher boiling point. जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे, जो कि गैसेस स्टेट पे हो या लिक्विड स्टेट में हो, इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। बट ऐसे नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया बाकियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब जो भी है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा बाकियों की तुलना में ज़्यादा है। एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड इज़ हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोर देन अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। डायमंड का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ज़्यादा पे ही डायमंड मेल्ट करता है। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। और अगर किसी टॉपिक पे आप लोग किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।